Hello everyone, my name is Siruchi Rai. I am assistant professor at Rameshwam Institute of Technology and Management, Lucknow. Today I am going to discuss about a topic emulsion part 1. In this part we will discuss about a brief introduction of an emulsion, its classification and type of emulsifying agent used to make a emulsion. So let's start. Emulsion. So what is emulsion? Emulsion is a biphasic liquid dosage form. Biphasic means, see, this is biphasic. Biphasic means having a two phase. Bi means two and phase means phases. Two phases means one is oil and other is the aqueous phase. So two biphasic liquid preparations containing two immiscible liquids. Immiscible means which are not miscible with each other. Mix nahi hote, they are not miscible with each other. Therefore, we need an emulsifying agent to mix oil and water together. Fine. They in one phase of which is disperse phase, and which disperse phase is the phase which is in the continuous phase. Now, what is continuous phase and what is disperse phase? Let's have a definition of disperse phase as well as continuous phase. Liquid which is converted into minute globules. Minute globules means the small globules like this, and is known as a disperse phase, as well as we can also say it internal phase. हम उसे internal phase भी कह सकते हैं और disperse phase भी कह सकते हैं. The another is the continuous phase, the liquid in which the globules are dispersed. These globules, ये जो globules रहते हैं disperse होते हैं, उस phase को बोलते हैं the continuous phase, or we can say the external phase. Continuous phase and external phase. As you can see in this diagram, here I have drawn the diagram where this is the oil in water type of emulsion. I will tell you how to identify this is oil in water or water in oil type of emulsion, but this is an example for water in oil, which means water is in the disperse phase. ये जो water है, ये globules आपको दिखाई दे रहे हैं, they are the disperse phase, and the oil is the continuous phase. ये continuous phase है, ज़्यादा amount में present है, this is the continuous phase. And जो ऊपर से हमने add किया है, जिसके globules बन गए हैं, उसको हम बोलेंगे disperse phase. Fine. So I hope you understand the difference between the disperse phase and the continuous phase. So now emulsion क्या है? Emulsion एक biphasic liquid dosage form है जिसके अंदर एक phase disperse phase होता है, another is the continuous phase. These are the two phases, therefore they call is biphasic. And these minute globules, they may be water or may be oil. In case of water in oil type of emulsion, water is the disperse phase. In case of oil in water type of emulsion, oil is the disperse phase. Fine. Next is the globule size. Now these globules, these minute globule size, and depending upon this globule size, we called emulsion in different type. That one, number one is coarse emulsion, then fine emulsion, micro emulsion, and then last is the nano emulsion. So these names which is given to the emulsion is on the basis of ग्लोब्यूल साइज़ की रेंजेस के बेसिस पे, साइज़ डिफरेंस के बेसिस पे हम इमल्शन को इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डिफरेंट नेम दे दिए हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द माइन्यूट ग्लोब्यूल्स. स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन, coarse emulsion. Now what is coarse emulsion? Coarse emulsion having a large globule size. Large globule size होता है, उसे हम कहते हैं coarse emulsion. Coarse means the बड़े particle, the solid or bigger particles. Fine. Normally the size range of emulsion is in between 0.025 to 25 micron diameter, and in case of fine emulsion the mean diameter is below 5 micrometer. 5 micrometer से below जो size होगा globule का, they comes under the fine emulsion. Next is micro emulsion. Micro emulsion means having a smaller diameter as small as 10 nanometer. Now nanometer, from micrometer it's gone to the nanometer, smaller size में जा रहा है, therefore we call it micro emulsion. Next and the last is nano emulsion. Nano emulsion having a particle size or diameter in between
10 to 1000 nanometer. Now this size is very smaller than the micro emulsion. So आप यहाँ पे देख सकते हैं the particle size is decreasing. पार्टिकल साइज जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है उस केस में हम इसको पहले कोर्स बोलेंगे, देन फाइन बोलेंगे, एंड देन इट कॉल्ड इज माइक्रो एंड लास्ट इज नैनो इमल्शन. Fine. So this is a brief introduction about the emulsion. Emulsion is a biphasic liquid having two phases. One is dispersed and other is the continuous phase. And next is the advantages. What are the advantages of emulsion? For making this type of liquid dosage form, there are certain advantages. Number one advantage is medicines having unpleasant taste, means which is not acceptable by the patient. So that unpleasant taste इस formulation का होता है, ऐसे medicines का होता है, ऐसे drugs का होता है. That drugs can be formulated into the emulsion. Then and odor as well as odor and made more palatable. Palatable का मतलब है acceptable, acceptable to the patient for oral administration in form of an emulsion. For example, castor oil, cod liver oil, these type of oils. अगर हम इस तरह के oils की एक formulation बनाना चाहते हैं, so what we need to do is we'll make a emulsion. Emulsion बनाने से we can coat the drug in oil phase, or if it's oil soluble, and we can coat the drug in the water if it's water soluble. So इस case में we'll make the formulation according to the type of medicine, the solubility characteristic basis. Next is emulsion provides protection against the drug which are prone to oxidation or hydrolyzation. So by making emulsion, ये इसकी advantages हैं emulsion की कि in this case the drugs having a oxidation property जो बहुत जल्दी oxidize हो जाते हैं in another dosage form, they can be this oxidation hydrolysis property, we can reduce this property by making an emulsion of that particular drug. Then next is various external preparations such as creams, lotions, foam, aerosols are formulated in emulsion. आप डेली लाइफ में इस तरह की जो फॉर्मुलेशंस हैं उनको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ emulsion. वो भी एक emulsion की ही फॉर्म है, जैसे क्रीम्स हो गई हैं, लोशंस, फोम्स, aerosols, these all are the type of emulsion. Next is sterile and stable intravenous emulsion in case when patient is unconscious का मतलब है patient अपने होश आवाज़ में नहीं है, which means if it's continuously vomiting हो रहा है and he is not conscious, he is sleeping, in that case आप उसको कोई भी dosage form नहीं दे सकते. In that case intravenous means जो veins में injection लगता है, that is more acceptable to the patient. So in that case you can also give this type of emulsion, this sterile emulsion. See, when you are talking about intravenous, your formulation must be sterilized होनी चाहिए, as well it must be stable. So emulsions can be used for intravenous administration in case when patient is unconscious. Patients are unconscious है, उस case में we can give a intravenous administration of an emulsion, and especially this type of intravenous emulsions contains carbohydrate, vitamins to the patient which is unconscious. Next is it improves, another advantage is it improves the absorption of oil when taken orally. जब हम oils को orally अगर we wanted to give a patient the oils, so oils की solubility में enhances when you give emulsion, when you use emulsion as in different doses form. Next is radio opaque emulsions are used for X-ray examinations. Of X-ray examination के case में you have all seen they've applied some emulsion or a gel which is used to penetrate that radiations and make a barrier between the instrument and the skin layer, your skin layer, and easily make the examination to the X-ray. So X-ray examination के अंदर भी will use, we can also use an emulsion. It's also advantages in the having a radio opaque emulsion. The only radio opaque emulsions can use for X-ray examination. Next is the disadvantages. Disadvantages of emulsion. Disadvantages: uniform dose distribution is difficult. Definitely uniformity is not there. Uniformity इसलिए नहीं है because they are the minute globules, और ये जो minute globules होते हैं, see you can see here, for this is the emulsion having a minute globules, fine,
नॉट डिस्पर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी इसलिए नहीं है बिकॉज दे में सेटल डाउन, ये पार्टिकल्स जो होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. देयरफॉर यू हैव सीन ऐसे बहुत सारी डोजेस फॉर्म होती हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिनमें लिखा होता है डायरेक्शन इज देयर, शेक वेल बिफोर यूज. दिस इज द रीज़न बिकॉज आफ्टर सम टाइम दे गेट सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाते हैं. एंड देयरफॉर इफ़ यू विल टेक द डोजेस फॉर्म, अगर आप ऊपर से यहाँ से अगर आप 1 ml उसमें से कंज्यूम कर लोगे तो जो भी उसके अंदर ऑयल है, ऑयल अगर इसके डिस्पर्स फेज में है, उसके अंदर अगर ड्रग सॉल्युबलाइज है, यू डू नॉट गेट दैट ड्रग. सो देयरफॉर यूनिफॉर्म इट इज़ नॉट देयर. Accurate amount of drug which needs to be there when it is uniformly distributed is not there in case of emulsion. Next disadvantage is if not shaken well before use, dose accuracy decreases in comparison to the solution. अब यहाँ पे we will comparing the emulsion with the solution. Solution का मतलब है फॉर्मल, जब आप नॉर्मल एक सोल्यूशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं, in case of sugar solution, once sugar is dissolved in the water, it make a uniform and single एक compartment बन जाता है, which means अगर आप इसमें से 1 ml ऑफ सिरप अगर आप लोगे तो आपको सेम अमाउंट ऑफ शुगर जो उसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एक्यूरेसी होगी, विच मीन्स एक्यूरेट अमाउंट ऑफ शुगर यू विल गेट. बट इन केस ऑफ एमल्शन अगर आप इसको शेक नहीं करते हैं, विच मीन्स दिस इज normal phase, and when you shake it gives you this type of diagram. Clear? So in this case you get the accuracy, but if you do not shake it, then you do not get the accurate amount of drug which needs to be there when you uniformly distribute the emulsion. So uniform distribution is very important, so therefore it affects the accuracy of the drug. So the another disadvantage is difficult to transport. Definitely जितनी भी liquid doses form होती हैं, we have already studied about the liquid doses form. Their transportation is a bit difficult because there is transfer leakage. Leakage के chances हो सकते हैं. Therefore, transportation is difficult for liquid doses form. Next is cracking of emulsion may take place on contamination. कंटामिनेशन मीन्स कोई भी अदर पार्टिकल उसके अंदर अगर प्रेजेंट होता है, कोई ऐसे एक्सिपेंट जिनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई भी कंटामिनेशन उसके अंदर आता है emulsion के अंदर, इट माइट क्रैक. क्रैकिंग का मतलब है उसका फेस सेपरेशन होना. फेस सेपरेशन मीन्स वाटर सेपरेट हो जाएगा, इस तरह की 2 लेयर्स आपको दिखाई देने लगेंगे, विच मीन्स यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया एंड दिस इज वाटर, वाटर सेपरेट हो गया, water separate out हो जाएगा. So this is the disadvantage of emulsion. If there is any contamination, it may crack. Next is the improper storage will affect the dispersion system. Improper storage, the storage condition might is जो भी इसकी storage condition होती है emulsion की, for example if we need to store it at the 4 degree Celsius पे अगर आपको उसको store करना है, अगर आप यू नॉट गिव द प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस आप नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, इन दैट केस जो डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्स सिस्टम मे बी वाटर और मे बी ऑयल जो होगा, इट मे गेट अफेक्टेड, वो इफेक्ट होगा. इसलिए स्टोरेज कंडीशन, द शेकिंग एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड कंटामिनेशन, दीज ऑल थिंग्स दे अफेक्ट द टाइप ऑफ emulsion you are using. Next is the type of emulsion. Now what are the types of emulsion? Emulsions are basically there are of 2 types, water in oil and oil in water, but nowadays a multiple type of emulsion is also coming. Multiple type of emulsion के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं वाटर इन ऑयल. वाटर इन ऑयल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड वाटर. क्लियर? अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ आई टेल यू टू मेक अ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ emulsion, सो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको किस तरह से इसे बनाना है, मतलब आप बीकर में क्या लोगे एंड ऊपर से डिस्पर्स फेस कौन सा होगा, उसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक ट्रिक देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू टू मेक अ वाटर इन ऑयल. क्लियर? तो आप उसको इस तरह से लिख लेंगे, वाटर इन ऑयल, एंड ऑयल इन वाटर को आप इस तरह से लिखेंगे. क्लियर? नाउ बहुत क्लियर है, बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे व्हेन यू आर मेकिंग वाटर इन ऑयल, सो आपको क्या करना है, बीकर में क्या लेना है, जो नीचे यहाँ पे दैट इज ऑयल. ऑयल आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फेज होगा, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस फेज, एंड आपको ऊपर से पोर करना है दिस वाटर. वाटर के क्या होंगे, माइन्यूट ग्लोब्यूल्स.
Clear? So this is the water in oil type of emulsion. In case of oil in water type of emulsion, हम beaker में क्या लेंगे? Water. We'll take water in beaker. Clear? And dispersed phase क्या होगा? Dispersed phase is the oil and the continuous phase is water. So इस तरह से आप identify कर सकते हो कि आपको dispersed phase में क्या लेना है and the continuous phase में क्या लेना है. Clear? So this is the simple trick to identify the type of emulsion आपको कैसे बनाना है. Dispersed phase में क्या होगा, external phase क्या होगा और the continuous phase क्या होगा और internal phase क्या होगा. Clear? Next talking about the multiple emulsion. Multiple emulsion के बारे में बात करते हैं. In this case it must be water in oil in water or oil in water in oil type of emulsion. Clear? So, इस केस में इस तरह का जो इमल्शन होगा वो कैसे बनेगा, ये दो पार्ट में बनेगा. क्लियर? विच मीन्स फर्स्ट द प्राइमरी इमल्शन जो आपको बनाना है दैट इज वाटर इन ऑयल. वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है, विच इज ऑयल जो होगा दैट इज इन द कॉन्टिन्यूस फेज, ये कॉन्टिन्यूस फेज के अंदर होगा एंड दिस वाटर इज इन द डिस्पर्स फेज, ये डिस्पर्स फेज के ऊपर होगा. देन दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी इमल्शन, प्राइमरी इमल्शन बन जाएगा. एंड देन लास्ट में आपको क्या करना है, यू नीड टू ऐड वाटर. आप उसके और उसके अंदर वाटर ऐड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, WOW टाइप ऑफ इमल्शन, जिस द मल्टीपल टाइप ऑफ इमल्शन. सो मल्टीपल टाइप ऑफ इमल्शन, एक प्राइमरी इमल्शन होता है एंड अनदर इज द सेकेंडरी इमल्शन. दो इमल्शंस होते हैं इन अ सिमिलर मैनर. इन दिस केस वाटर इज इन द कॉन्टिन्यूस फेज, यहाँ पे वाटर क्या है कॉन्टिन्यूस फेज में रहेगा एंड द ऑयल जो होगा दिस इज द डिस्पर्स फेज, ये डिस्पर्स फेज रहेगा. तो प्राइमरी इमल्शन जो यहाँ पे बनेगा विच इज oil in water type of emulsion, this is the primary emulsion, and then you will add oil to the oil in water type of emulsion. So ये क्या हो जाएगा, multiple type of emulsion हो जाएगा. So these are the type of emulsion, water in oil, oil in water, and the last is multiple emulsion. Next is the difference between oil in water type of emulsion and water in oil type of emulsion. Let's start with number one difference. Number one difference is water is in the continuous phase which is the dispersed phase. Continuous phase इसे हम कहते हैं dispersion medium. Now dispersed phase और dispersion medium दोनों different words हैं. Don't mix these two words together. आपको याद रखना है कि dispersion medium की अगर हम बात कर रहे हैं तो we'll talking about the continuous phase. हम उसमें continuous phase के बारे में बात कर रहे हैं. Clear? एंड ऑयल इज द डिस्पर्स फेज. तो हम यहाँ पे डिस्पर्जन और डिस्पर्स फेज को देख सकते हैं. क्लियर? सो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि द डिस्पर्जन मीडियम का मतलब है द कॉन्टिन्यूस फेज एंड डिस्पर्स्ड फेज का मीन्स इज द डिस्पर्जन ग्लोब्यूल्स. जो ऊपर से आप ऐड करोगे दैट इज द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स. सो इन केस ऑफ सिमिलरली in case of water in oil type of emulsion, oil is in the continuous phase and water is the dispersed phase. Second difference is, second is the generally they are non-greasy and easily removable from the skin surface. अब ये ऐसा क्यों है, बिकॉज इट इज़ ऑयल इन वाटर. ऑयल इन वाटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर क्या है कॉन्टिन्यूस फेज में है, विच मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में इट इज़ प्रेजेंट इन द मोर क्वांटिटी. वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ईजिली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम स्किन. क्लियर? एंड दे आर नॉन ग्रीसी. नॉन ग्रीसी इसलिए है बिकॉज ऑयल इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑयल इज़ लो एज कम्पेयर टू द वाटर. क्लियर? in case of this type of emulsion, water in oil, they are more greasy because they are having a oil phase in a continuous phase. oil इसमें continuous phase में रहता है, therefore it is more greasy and not easily removable from the skin surface. आप इसको easily remove भी नहीं कर सकते skin surface से because it's having a more amount of oil. Next is it meant for the internal use as a bitter taste of oil. Oils की अगर masking करनी है तो हम उस केस में oil in water type of emulsion को यूज़ करेंगे, which means जो minute globules हैं उसके अंदर हम अपने drop को add कर देंगे and then we'll use that and we'll make a oil in water type of emulsion. And in case of water in oil type of emulsion अगर इधर देखेंगे meant for external use के लिए यूज़ करते हैं हम इसको because
हम इसको एक्सटर्नल यूज़ के लिए इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज आप स्किन पे अगर क्रीम्स लगा रहे हो, लोशन लगा रहे हो, सो यू डोंट वांट कि वो ईजिली रिमूव हो जाए आपके स्किन सरफेस पे. सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑयल उसके बेस में रहता है, विच मीन्स मोर क्वान्टिटी दे आर प्रेजेंट, ऑयल इज इन मोर क्वान्टिटी, देयरफॉर इट मे स्टिक टू योर स्किन सरफेस एंड नॉट ईजिली रिमूव बाय द वाटर. ईजिली रिमूव नहीं होगा. क्लियर? Next is the externally applied emulsion. For example, for इसकी example है vanishing cream, provide cooling effect. vanishing cream जो है, जितनी vanishing cream होती है, they are oil in water type of emulsion, and here they are externally applied emulsion prevent evaporation of the moisture from the skin. Basically I've already told you ये moisture को provide मतलब moisture को आपकी skin से remove नहीं होने देते, evaporate नहीं होने देते, because oil इसमें क्या है, continuous phase के अंदर present है. Next is the next and second last is water soluble drugs are more quickly released from the oil in water type of emulsion. डेफिनेटली अगर वो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं तो वो बहुत इजीली ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन से रिमूव हो जाएंगी, मतलब उसमें से इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं, आपके स्किन सरफेस पे चले जा सकती हैं, एंड दे मे इजीली गेट इनटू योर सिस्टमिक सर्कुलेशन. बट इन केस ऑफ ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स आर मोर क्विकली रिलीज. बेसिकली इसमें क्या होगा, ऑयल इज इन द कॉन्टीन्यूस फेज, ऑयल कॉन्टीन्यूस फेज के अंदर प्रेजेंट है. सो इन दैट केस जो ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वो बहुत ईजिली इसमें से रिलीज हो सकती हैं. एंड द लास्ट इज इट गिव्स पॉजिटिव कंडक्टिविटी टेस्ट एज वाटर इज इन द एक्सटर्नल फेज. कंडक्टिविटी टेस्ट जब हम इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे इन केस ऑफ ऑल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, इट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो देयरफॉर इट गिव्स अ positive conductivity test, and here it gives a negative because water is in the dispersed in a less quantity because oil यहाँ पे क्या है, continuous phase में है. So this is the difference between water in oil and oil in water type of emulsion. बहुत ही important question है and definitely आपको exams के लिए भी important है. Next is the classification of emulsion. Emulsion की classification की बात करते हैं. Number 1 emulsion, see the classification of emulsion को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं इमल्शन को बनाने के लिए. एंड सेकेंड आई हैव डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है, आई हैव डन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. In this, according to the emulsifying type of emulsifying agent used. Number 1 classification is emulsion containing natural gum. नेचुरल गम्स जो होती हैं उनके बेसिस पे जो हम इमल्शन बनाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं विच इज़ obtained फ्रॉम द नेचुरल गम. आर एग्जांपल्स आर गम अकेशिया एंड ट्रेगाकांथ. क्लियर? सेकेंड इज इमल्शन कंटेनिंग गम सब्स्टिट्यूट्स. इसके सब्स्टिट्यूशन में उसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं गम सब्स्टिट्यूट्स के लिए, उसका एग्जाम्पल है सेलुलोज, और जितने भी उससे डिराइव्ड हैं दे आर सेलुलोज एंड इट्स डेरिवेटिव. Emulsion, next is emulsion containing various soaps. Soaps are the surface active agent, they are surfactants, so उसके लिए हम use करते हैं. Next is emulsion containing starch, emulsion containing saponins, emulsion containing waxes. Examples are wool fat and beeswaxes. Emulsion containing synthetic waxes, hetomacrogol, emulsifying wax. बहुत important wax है और most commonly use की जाती है. What type of, many type of emulsions. Now this is according to the route of administration के basis पे have classified this type of emulsion. Number 1 is oral, external, parenteral and rectal emulsion. ओरल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन को हम यूज़ करते हैं. यूज़ फॉर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑयल हैविंग अ मेडिसिनल यूज़. बेसिकली यहाँ पे अगर हम ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन को यूज़ करते हैं, सो ऐसे ऑयल जिनको हम ओरली देना चाहते हैं टू द पेशेंट, उसको हम इस तरह की फॉर्मुलेशन बना सकते हैं. एग्जाम्पल है जैसे कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल्स को, इफ़ यू वांटेड टू गिव टू द पेशेंट अ कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल, तो उस केस में विल गिव अ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में केस में ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन इज़ यूज. ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन इसके अंदर यूज़ किया जाता है, और वी कैन यूज़ अ वाटर इन टाइप, दोनों टाइप का यूज़ किया जाता है. बट बेसिकली वी यूज़ water in oil type of emulsion is more preferable, and they have a good therapeutic activity and use as a carrier for drugs. An example is cold cream is an example for this. And then next is parenteral. For parenteral we use
to administer fat, vitamins A, D, E, K, oil soluble hormones and other, they having a more rapid absorption by this. The last is they are used for enemas के लिए use करते हैं for evacuation of bowel and starch mucilage is used here. नेक्स्ट इज द इमल्सिफाइंग एजेंट. इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दोनों फेजेस को आपस में मिक्स करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, फाइन. एंड दीज सब्सटेंसेज आर एडेड टू इमल्शन टू प्रिवेंट द कोलिशंस. का मतलब है आपस में जो टू पार्टिकल्स आपस में फ्यूज़ होकर एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म करते हैं, क्लियर, उसको प्रिवेंट करने के लिए. हैविंग इसके अंदर दोनों ही इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर हाइड्रोफिलिक, वाटर सॉल्युबिलिटी होती है, हाइड्रोफोबिक, दोनों ही पार्ट होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग, दोनों पार्ट. एंड द अदर इज एंड दीज एजेंट्स एब्जॉर्ब ऑन टू द वाटर, ऑयल वाटर की सरफेस पे, विच मीन्स मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ. दिस इज ये जो सरफेस होगा जहाँ पे ऑयल और वाटर दोनों मिक्स होते हैं, इस सरफेस पे एक्ट करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट एंड इसका इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं एंड उसको मिसेबल कराते हैं ऑयल एंड वाटर को. सो दिस इज दी 3 वेज में एक्ट करता है. इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन, इमल्सिफाइंग एजेंट, एंड डिक्रीजेस द पोटेंशियल फॉर कोलेसेंस फॉर फॉर्मिंग अ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को फॉर्म करता है, विच मीन्स डबल चार्ज जो होगा. फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग पार्टिकल माइन्यूट डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स है, उसके ऊपर जिस तरह की डबल इलेक्ट्रिकल चार्ज को फॉर्म करेगा, क्लियर. सो दिस इज हाउ इट एक्ट्स. Next and the last is the effectiveness of emulsifying agent depends upon the chemical structure, concentration, solubility and the physical property. So these are the classification of emulsifying agent. Emulsifying agent classified into natural, semi-synthetic, synthetic and inorganic. So इसमें एग्जाम्पल आप सब देख सकते हैं, नॉन आयोनिक के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, कैटाइनिक की एंड एनाइनिक की. सो दिस इज़ द टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट. एग्जाम्पल के साथ आपको इसको पढ़ना है. एंड दिस इज रेफरेंसेस फ्रॉम वी हैव टेकन द कंटेंट. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.